Hi Khalko! It's basically Mama and Mali day today, because let me just tell you something about this beautiful queen of mine. She hasn't been a queen recently because every single day I've been saying, Mama, did you want to come down my house? Mama, can I take you and Papa out? Mama, what are you doing today? Mama, I've cooked food, coming over. And she's basically said, no, but yeah, I'm in Nafia's house. No, it's yes, not. and then she said, I'll see. I think I'm gonna go home from Nafia's. So she's been going to Nafia's, as you can tell, which is her favorite child day. She's been going to Nafia's day in, day out. But when I've been saying, come over, blah blah blah, this stuff, she's basically said no. Nowadays, the thing is, Assalamu alaikum, hi khalko. So the thing is, nowadays, Nafia's home, because she's doing her GP exam again, and you know she's only doing locum, so she's most of the time home. So that's why I visit her more than any other child, because they're all working. So Maliha is in uni because she's in her last exam to become a barrister, alhamdulillah. And then her product, Mal serum and Mal hair oil, she's so busy. And then she's bringing another third product to the market, so she is 24/7 so busy. Plus she is doing her house renovation, and as well as that she just made 101 excuses. No, this is true, and you know this is fact. And as well as that, I still even with those things I've been telling you come over, so I know you're that's telling your fault. me. Sami is moving, he is busy. Siddiq start new project which is amazing, he is busy. So the only person is Nafia, who is nowadays only. She is now busy, so I visit her more than any other child. That's the truth. यही सच है और बस सिर्फ सच है। लेकिन मैं क्या करूँ, अब मलिहा नहीं समझती, और मैं मलिहा की तरफ हर रोज जाऊँ, हर रोज। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मेरी वजह से ये डिस्टर्ब, कसम से मेरा सारा प्रॉब्लम ये होता है, मैं कहती हूँ मेरी वजह से मेरे बच्चे डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि ये फिर एंड ऑफ द डे ये मेरी लुक आफ्टर करेंगे और फिर इनके काम रह जाएंगे। दस अल्लाह knows that. Okay? बस। She in Porto we say rambe. Someone who speaks and speaks and speaks. And that is who? Mama. Okay. That's it. We're going to ask her now because we're fun little. Why it isn't? No, it really isn't a fun fact. She's buying some flower for her. So basically, we when I was younger, I was taught Quran by Zainab Appa, and I haven't seen Zainab Appa in I don't even know how long. From 2019. So and she doesn't live far away from me. She's like 10 minutes away. But because Maliha is always ill, and Mama hasn't seen her as well. But today we decided we're gonna go. So I'm by Asda now. Gonna pick up some flowers and then we're gonna go straight to Zainab Appa's house. हम ज़ैनब आपा के घर जा रहे हैं क्योंकि वो आप लोगों ने मेरे मुंह से सुना होगा, वो हमेशा मेरी फेवरेट है, मेरी बुरे वक्तों का साथी है, बहुत अच्छी है, बहुत। One of those friends that have been the OG friends from day one. But then you've kind of, as you've gone through your life, you've separated from them. She's an amazing person. तो उसकी तारीफ के लिए words नहीं है मेरे पास, लेकिन आज हम उसके घर जा रहे हैं क्योंकि बहुत दिनों से मेरा दिल चाह रहा था, लेकिन जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है मैं बस दुनिया से कट। So many times I was just like, oh, we should go see Zainab Appa. But it's one of those people where you don't need to ring them, and you just, every guest just comes in, they just come through the door and they're like, hi, salaam alaikum. They're one of those people. There's people that don't like those type of people coming in. They need a whole, hi, I'm coming, I come over, blah blah blah. But she has, you don't need to, you don't need an invite basically. Anyway, okay, let me help you. लेके आओ मलिहा जी, आप लेके आओ फ्लावर, और मम्मा जी बातें करती है। तो ये ज़ैनब पापा के बारे में यही बात बतानी थी कि मैं एक तो मैं पोतकॉल चली गई हूँ, तो कार्डिफ और पोतकॉल में तकरीबन 30 मिनट का रास्ता है, उसकी वजह से भी सारे कार्डिफ वाले मुझसे रह गए। दूसरी, जब से मेरी एक्सीडेंट हुआ है मैं पता नहीं दुनिया से बेजार हो गई हूँ। मैं किसी से नहीं मिलती ज़्यादा, हालांकि इन फ्रेंड्स के बगैर मेरी ना सुबह होती थी ना शाम होती थी, लेकिन और कुछ मैं पाकिस्तान के विज़िट चैरिटी के वर्क की वजह से मैं अपने सारे अपनों से दूर हो गई हूँ, क्योंकि बैलेंस करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है कि चैरिटी का काम इतना ज़्यादा होता है, पाकिस्तान जाओ, प्रोजेक्ट करो, ये करो, फंड इकट्ठा करो, फिर फंड को संभालो, अकाउंट्स बनाओ, अकाउंटेंट को मिलो, इट्स टू मच वर्क,
टू मच। एक तो हो कि बस आसान सी चैरिटी हो, पैसे ये लिए यहाँ लगाए, लेकिन अगर आप थ्रू प्रॉपर चैनल करते हो तो इट्स अ लॉट ऑफ वर्क, इट्स अ लॉट ऑफ वर्क। तो मैं उन सब से माफ़ी मांगती हूँ जिसको मैं आजकल नहीं मिलती हूँ, आजकल क्या बल्कि 2019 से नहीं मिलती हूँ। मेरे दिल में सब रहते हैं, मैं सबके लिए दुआ करती हूँ, सबको याद रखती हूँ। लेकिन एक बात और भी है कि 2019 के एक्सीडेंट में मैं पूरा साल हॉस्पिटलों के चक्कर लगा लगा के बेड में पढ़ के, और मुझे वो एक हो गया है कि क्या मैं ये बात कैसे करूं कि वो जब मैं बीमार थी, टूटी पजी थी, ख़त्म हो गई थी, तो मुझे सबसे ज़्यादा सहारा आप लोगों ने दिया जो मुझे वॉच करते हैं। आप लोगों की वजह से मैंने मीडिया ज्वाइन किया 2019 में। मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग पेश बातें करती थी, और बाकी कुछ कोरोना का टाइम था, कोरोना को कुछ इल्ज़ाम दे देंगे, कुछ मैं बीमार थी, कुछ किया था, तो बस वो दिमाग पे एक इफ़ेक्ट हो गया कि ये बुरा वक्त है तो बुरे वक्त पे कोई भी नहीं पूछता। कोई बस एक दो दफ़ा लोग आए, पूछा या फ़ोन किया कि आप कैसे हो, फिर किसी ने ना खबर ली ना खबर ली शायद वो मेरे दिमाग में रह गया, और बस मैंने तकरीबन किसी के साथ ताल्लुकात नहीं छोड़े, लेकिन कट ऑफ हो गई, बस सबसे कट ऑफ हो गई थी। फिर मैंने कहा हम सब इंसान हैं, कोरोना आया था, पता नहीं किसको क्या तकलीफ़ होगी, किसको क्या होगी। तो अब मैं सब उन लोगों से मिल रही हूँ जिनके साथ मैंने नहीं मिली हूँ 2019 से। कोशिश करती हूँ कि सबको मिलूँ, क्योंकि जितने महीने मैं पाकिस्तान में ना हूँ, इधर होंगी, मैं ट्राई करूँगी कि मैं अपने उन सब से मिलूँ जिनके साथ मेरे ताल्लुकात थे, मेरे दोस्त थे, मेरे गम दर्द की शरीक थे। इनमें एक मौलाना याकूब बाबा जो मेरे बाबा थे, मुझे उन्होंने बेटी बनाया हुआ था, बल्कि मैं बस समझती थी कि वही मेरे बाबा जान है। तो वो मुझे मिले साइमा की वेडिंग पे, और उन्होंने बहुत गिला किया कि सबिया तुम कहाँ गायब हो, तुम आती नहीं हो, फ़ोन मैंने कहती जगह जगह से तुम्हारा नंबर ढूंढा, तुम्हें फ़ोन किया, तुम फ़ोन नहीं, यहाँ तक कि वो कहते मैंने पाकिस्तान तक फ़ोन किया पर तुम फ़ोन नहीं उठाती तुम ये। तो उनके लिए मैंने बहुत गिल्टी फील किया, पर उनको भी मिलने जाऊंगी इंशाल्लाह। मलीहा ले आई है बुके अपनी ज़ैनब आपा के लिए, ज़ैनब आपा की तरह खूबसूरत भी है। तो चलते हैं ज़ैनब आपा की तरफ। See you in a bit. चलिए See you in a bit. चत्ता गुरदुला चत्ते की खोदला इस बदला ज़खो बाजार ततलल माद पार मरगी। I got you right. Yeah. Let me just tell you, we were speaking just without any kind of mother-in-law. I was just telling Mama right now, like how she was saying, you know, my life was difficult and everything, and the reason why my life has been so difficult has been because of my in-laws. That's what I say. And it's just it's so true. But what I was telling Mama, and I ain't saying it because she's my mother or that she's sitting with me, is that I don't know anybody in my life, anybody who is as giving as Mama. Like she was saying that, you know, you guys were a bit upset because of a situation that she gave, you know, whatever clothes she's wearing as well, she'll take the clothes off her back to give it to the next person, no matter what they do to her. I remember one of my aunts, basically Mama's brother's wife, she has been horrendous to Mama. We won't say her name, and she's been so horrible to Mama. But when Mama found out even that she was ill, remotely ill, she was fine in the end, but she was remotely ill, she was so upset and doing so much. Well, I feel like I'm trying to change right now, but if this was me maybe a week ago I would be like, good, what goes around comes around. But alhamdulillah, Allah has given you a very pure heart, mashallah. Very. Yeah, anyway, by the way, Maliha was recording me hidely. I really don't know that she I didn't put it on for long. ये तकरीर ऐसे स्टार्ट हुई कि मुझे मलिहा कहती है कि ऐसे तुम्हें डिप्रेशन कब हुआ या ये, तो मैंने कहा मुझे ऐसे डिप्रेशन हुआ. No, what I said was, I forgot, I said, have you all, because we were discussing Mama's illness, I said, have you always been ill, or is it just since your gastric मलिहा मुझे thing? कहती है कि तुम हमेशा ऐसे बीमार रहती थी या
गैस्ट्रिक बाईपास के बाद बीमार हुई। तो मैंने कहा नहीं मलिया, मैं हमेशा से बीमार रहती थी, मुझे एपिलेप्सी थी, मुझे ये था, लेकिन मैंने कहा इसको सबकी जो रूट्स है ना वो मेरे इन लॉज से शुरू होते हैं, क्योंकि मेरे इन लॉज अगर अच्छे होते, ठीक होते, मैं बच्ची थी, छोटी थी, तो शायद मेरी जिंदगी अच्छी होती। मैंने कहा मैं किसी को ब्लेम नहीं करती, बस ये मेरा नसीब था, मेरे नसीब में ये सब कुछ होना था, हो गया। लेकिन मैंने मलिया को ये कहा कि शायद अगर मेरे इन लॉज अच्छे होते तो शायद मेरी जिंदगी अच्छी होती। तो मलिया ने फिर आगे से कहा कि ये बात तुम बिल्कुल अच्छी कहती हो, क्योंकि फिर मलिया started that, Maliha, I forget. Can I just say something completely off topic, Mama? And I haven't spoke to Mama about this, but you know when you were saying those people that leave comments, I know they're usually people we know, right? Yeah. So I didn't see this video, but your video came up on my TikTok FYP. It was you and Sadiq. Yeah. And somebody commented on it that he looks like he's embarrassed of you. Yeah. And she said that you were like, he isn't embarrassed of me, and you said, you know, and she said that, oh, my mother would never dress like you, or something like wear dresses like you, or act like you. Yeah. And then I was just like, do you know what? Dress like teenage, like you. Yeah. So do you know what? Next to that comment, what it said? It said on my phone, from your contacts. Yeah. Is somebody that's in my phone. So basically I still don't know who it is, but the name is Hormonal Princess. Yeah. And it said that person is from here. The people. It said it's from your contacts. So then I tried to go through my contacts and tried to figure out who it was, and I couldn't figure it out. But I know who, if you're even watching this, whoever's Hormonal Princess, you're somebody I know. Yeah. And they left a message on you. Someone I know. मैं मलिहा को बार बार कह रही हूँ कि मलिहा, जो हमें सिर्फ फॉलो करते हैं पराये लोग हैं, वो क्यों गलत कमेंट भेजेंगे? ये हमेशा वो लोग कमेंट भेजते हैं जो कि हमारे अपने होते हैं, जो हमें जानते हैं, चाहे हमारी फैमिली, चाहे हमारे दोस्त। मलिहा कहती नहीं मामा ये कीबोर्ड वाले हर जगह होते। मैंने कहा नहीं मलिहा किसी को क्या तकलीफ है? like, whoa, कि वो how messed up. मेरे ड्रेस से और किसी को तकलीफ नहीं, मेरे ड्रेस से सिर्फ मेरे इन लॉज को तकलीफ है। वो कहते हैं कि मैं क्यों यंग लगती हूँ, मैं क्यों प्यारी लगती हूँ, मैं क्योंकि वो खुद वो हर चीज करे। जैसे कि मैंने एक दफा छोटे स्लीव्स पहने थे जब मैं ताजा शादी करके आई थी, छोटी थी, 16 साल की थी। तो मेरी नंदो और मेरी सास ने उसका एक बहुत बिग फस बनाया कि ये डूमड़ियां पहनती हैं, ये कंजरियां पहनती है, ये सारा कुछ कहा। लिटरली 4-5 महीने बाद सब ने कप वाले It's always. फिर मेरे ड्राइविंग पे सब ने मुझे कहा लाला बन गई हो, ये अब हमारे घर का लाला बन गई। लाला ये नहीं मर्द। लिटरली 1 साल में मेरी इन-लॉज की सारी औरतों ने ड्राइविंग पास कर दी। Mama usually sets the tone and everybody follows, but even like when I was ill, somebody said to me that you're ill and you're in this way because you don't wear a hijab, and now they don't wear a hijab. Somebody said to me when I was ill that you're ill and you're in this position because you don't wear a hijab, and now they don't wear a hijab. So, and who is that, Maliha? You need to tell. I will never tell. Please tell I will never tell. Okay, come on, let's go. Okay, we're outside Zainab Baba's house. We're going to Zainab Baba's house. We'll see you in a bit. Okay. So we just went to Zainab Baba's house, but she wasn't there because she was in hospital for baby. Zainab Baba, if you're watching this, I love you so much. Yeah, and Talha, if you watch my vlog, I'm gonna come and sing for you. Okay, let me sing that for Talha. Mama. Okay. So this song is for Talha. Talha, my Jan, my sweetheart. Orde alama chapira orde pamanski zo swazedama. Orde alama chapira orde pamanski zo swazedama. Orde Talha Zabar Azam. और that song बदलता है मखा इंशाल्लाह चीज़ें ना बाबा hospital ना राशि. I just find out that they're watching. I'm gonna buy some dhania whatever. So I just find out that Talha family watching
my vlog, and I was like, I always talk about Zainab Appa and Talha mother and Talha, but today I find out that they're literally watching my vlog. That's so And cute. all my old street people, they're watching my vlog, and I was like, I'm happy as well, but then I say मैं तो इतने बकवास करती रहती हूँ अपने vlog में, तो वो मेरे सारे अपने देखते हैं. Anyway, thank you so much for watching my vlog and for liking my vlog. I love you, Talha. See you in a bit.